So, all right. So we welcome you again, and let's start our session. All our teachings here are based on the teachings of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who's the founder Acharya of ISKCON movement. So why Bhagavad Gita? और भी किसी चीज को और भी किसी बुक को हम लोग टच अपॉन कर सकते थे फॉर लर्निंग लाइफ लेसन्स. और जनरली जब लोग लाइफ लेसन्स लर्न करना चाहते हैं या आप कुछ भी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो या तो आप साइकोलॉजी की बुक्स उठाते हैं या आप कोई मोटिवेशनल बुक्स उठाते हैं. भगवत गीता बहुत रेयरली उठाते हैं लोग. मगर अगर हम भगवत गीता की सेटिंग देखेंगे तो भगवत गीता की सेटिंग ऐसी है कि पूरा जो ग्रंथ है इट इज बेस्ड ऑन अ डायलेमा which is presented in front of Arjun. तो अर्जुन पूरी तरीके से इमोशनल है, he's confused, he's depressed, he doesn't know what to do, his decision making is not working, his mind and intellect have freezed, he is not sure what is right and what is wrong. His head, although is there, but it's not working. His heart has taken over. And now his emotions have become so overwhelming that he is not able to make the right judgment. And that exactly is the situation for most of us in our lives. We have our heart and we have our head. And the right decisions usually have to be reached with a complete union of both heart and head, meaning the emotions and the intellect. But in our case, most of the times, our emotions prevail and we are not able to use our judgment. Or sometimes we make our judgment totally based on intellect, but we are not able to use the gut feeling, the emotional aspect, the emotional intelligent aspect of ourselves. So that exactly is the situation from where Bhagavad Gita is starting. And with the touch of divinity, the difference that brings in Arjun's life is that at the end he says, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone after hearing Bhagavad Gita. And I'm now firm and free from doubt. And that's what we want in our lives. We want to have a wonderful 2022, and then all our life should also be wonderful, not just 2022. So let's start reading. एक एक करके लाइफ लेसन्स देखेंगे, डिस्कस करेंगे. सबसे पहला लाइफ लेसन, you are known by the company you keep. So in the setting of Bhagavad Gita, we know that the war came about because of the enmity between the Kauravas and the Pandavas side. And the root of that enmity is the wrong association that Duryodhan kept. दुर्योधन का गलत संग किसके साथ? शकुनी के साथ. बचपन से ही क्या ट्रेनिंग है? Try to encroach on the wrong things. Even though that doesn't belong to you, doesn't matter. You can always win it over by wrong ways. Somebody teaching them vices right from the beginning. So somebody has rightly said, tell me with whom you are associating and I'll tell you who you are. So we see a lot of phrases like these, कि आप क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें पकड़ लीजिए, देखिए आपके आसपास कौन लोग हैं, किनका आप संग कर रहे हैं, किनका आप एसोसिएशन ले रहे हैं. जो भी एसोसिएशन आप ले रहे हैं उन्हीं का एवरेज आप बन जाते हैं, मिला जुला एक बन जाते हैं. तो एसोसिएशन हम कैसी रखें? यहाँ हम देख सकते हैं भगवद गीता से, अर्जुन इज कीपिंग द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा, एंड बिकॉज ही इज टेकिंग द राइट एसोसिएशन, he is being uplifted. हमारे साथ जिंदगी में क्या होता है, हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसी भी चीज के ऊपर अपनी ओपिनियन बनाना चाहते हैं. कोई भी इशू हमारी लाइफ में आता है तो हम सीधा जाते हैं, कोई इंटरनेट पर वीडियोस देखते हैं उसके बारे में,
और हम कोई बुक्स डाउनलोड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, हम अपनी ओपिनियन नहीं बनाते। हमारी जो ओपिनियन एट द एंड बनती है वो मिला जुला होता है, जो भी हमने एसोसिएशन ली होती है, चाहे बुक्स से, चाहे लोगों से, चाहे मीडिया से, चाहे यूट्यूब से, ये सारी ही हमारी एसोसिएशन होती है। तो आजकल एसोसिएशन केवल हम ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल एसोसिएशन तो आजकल बहुत कम हो गई बिकॉज ऑफ कोरोना। तो देयर इज सो मच ऑफ वेब बेस्ड एसोसिएशन दीज डेज। तो हम कुछ भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, फटाफट हम क्या करते हैं, कोरा पे डाल दो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, और उसके बाद हमारी अपनी क्या ओपिनियन थी उस सब्जेक्ट मैटर में वो हमें खुद ही नहीं पता होती। हमारा राइट टू इंडिविजुअलिटी हमने खुद ही बंद कर दिया। हमने अपने आप को लीडर एंड थिंकिंग मोड में डालने की बजाय हमने अपने आप को फॉलोअर मोड में डाल दिया। एंड नाउ आवर ओपिनियंस आर बीइंग बेस्ड ऑन आवर एसोसिएशन। वर्सेस लाइफ वो अच्छी है जिसमें हमारी एसोसिएशन बेस्ड हो हमारी ओपिनियंस के बेस्ड पर। हम ये सोचें कि हमें कैसी एसोसिएशन रखनी है, एंड विद माय इन्फॉर्म्ड जजमेंट अबाउट दैट आई चूज माय एसोसिएशन। जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। हमारी ओपिनियंस एसोसिएशन हमारी इन्फ्लुएंस कर रही है। तो हमारी एसोसिएशन कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, प्यूरिफाइंग, इंस्पायरिंग एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस देने वाली। पॉजिटिव इन द सेंस जैसे अर्जुन को एसोसिएशन मिली भगवान की, कृष्ण की एसोसिएशन अर्जुन ने ली और उसका आगे मार्गदर्शन हुआ। तो ऐसी एसोसिएशन ना हो जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाए। पॉजिटिव एसोसिएशन हो, नेगेटिव लोगों की एसोसिएशन ना हो। हम ये बोलें कि अरे भाई आज फोन किया फ्रेंड को, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, हाँ यार मेरा भी मन नहीं कर रहा, ऐसे तीसरे को किया, चेन रिएक्शन शुरू हो गया। पॉजिटिव एसोसिएशन हैज टू बी सॉर्ट आउट। सेकेंड, इट शुड बी प्योरिफाइंग, इट शुड बी अपलिफ्टिंग। हो सकता है कि कोई हमारे साथ एसोसिएशन हमें दे रहा है, वो हमारी मटेरियली तो बहुत अच्छी है, हमारी बाकी सब चीजें सेटिंग हो रखी हैं, मगर कहीं ना कहीं वो हमें नीचे गलत रास्तों पे लेकर जा रही है, या वो संग हमें किसी वाइसिस की तरफ लेके जा रहा है जो हम करना नहीं चाहते। हमारी ऐसी ओपिनियन नहीं थी, मगर उस एसोसिएशन की वजह से हम उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी एसोसिएशन पॉजिटिव के साथ साथ अपलिफ्टिंग एंड प्योरिफाइंग भी होनी चाहिए। कई बार हम लोगों की एसोसिएशन तो लेते हैं, मगर वो हमारी एसोसिएशन देने के चक्कर में क्या करते हैं, माई वे इज द हाईवे, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं रहती। Our association should not overpower us, it should not overshadow us, rather it should make us capable of making the right decisions. At the same time, it should be very inspiring. So good association is the life lesson number 1 from Bhagavad Gita. Let's move ahead. Life lesson number 2. ये जानना कि मैं कौन हूं। This is the reason which we have to look the life with. ये जानना कि मैं कौन हूं। क्यों? क्योंकि जो मैं हूं जब मुझे पता चल जाएगा तो सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की सॉल्व हो जाएंगी। दिस इज द की टू हैप्पीनेस। हमारी एजम्पशंस ये होती हैं कि हैप्पीनेस मीन्स दैट ओ आई शुड हैव ब्यूटीफुल हेयर्स। I believe I'm talking to girls, and this whole session that we have arranged is mostly for the ladies. But if you are a boy, still you can continue. So mostly us girls, we think that, oh, my identity is rooted in how I look, or how my hairs are, how is my skin, what people think about me, am I beautiful or not. All the problems that we are facing today, not just the problems related to our looks, but related to our existence per se, are rooted in this one question, who am I? जब इंसान ये समझ जाता है तो उसकी सारी डिप्रेशंस, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, मवे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थाने कर्षति। भगवान हमारी आइडेंटिटी बता रहे हैं
क्या कहते हैं कि लिविंग एंटिटी इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माय इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स। भगवद गीता हमें साइंस ऑफ सोल सिखाती है। जो हम देख रहे हैं वो हम नहीं हैं। जो हम ये जान जाते हैं तो हम उसके लिए काम करते हैं जो हम हैं, ना कि जो हम देख रहे हैं। भगवद गीता बताती है कि हमारे दो प्रकार के शरीर होते हैं जिससे हम कवर्ड होते हैं। हम जीवात्मा है, द सोल, जस्ट लाइक आई एम वेयरिंग अ पर्टिकुलर ड्रेस। सिमिलरली द सोल, जो हम हैं, is wearing subtle body and gross body. The gross body is what we can see, जो हमें दिखती है, आप मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको दिख रही हूँ। It is made of earth, water, air, fire and ether. पंचभूत जिसे आपने सुना होगा। इसके अलावा भी हमारा एक शरीर होता है जो हमें दिखता नहीं है। वो किससे बना होता है? मन, बुद्धि और अहंकार से। मगर ये दोनों ही हम नहीं है। We identify ourselves with our mind. मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरी जजमेंट ये कहती है, मेरी इंटेलिजेंस ये कहती है कि ऐसा होना चाहिए। But who am I? Am I this mind who is thinking? Am I this intelligent who is making the decisions? Am I this body of earth, water, air? Am I this? Or I am somebody superior to that? Who am I? भगवद गीता बताती है कि हम भगवान के अंश हैं और हम सच्चिदानंद हैं। हम एक स्पिरिट सोल हैं, हम एक जीवात्मा हैं। जब व्यक्ति ये जान जाता है तो उसकी प्रॉब्लम्स का कैसे अंत हो जाता है। वो अपने जीवन में केज की पॉलिशिंग में अपना जीवन नहीं लगा देता। केज की पॉलिशिंग मतलब केवल शरीर के हिसाब से ही नहीं जीता कि लेट मी जस्ट मेक दिस बॉडी ब्यूटिफुल। रादर ही वर्क्स ऑन हिज इनर सेल्फ and changes his character. He works on his character. इसीलिए जरूरी है कि हम ये जानें कि हम ये केज या हम ये बॉडी नहीं है। All the problems in the world are rooted in this one concept that I am this body. Because I'm this body, I have to look beautiful. Because I'm this body, I should not get fat. Because I'm this body, so I have to maintain it. What will happen if I lose my job? Who will maintain the body? All the problems are related and rooted in this one concept that I am this body. Bhagavad Gita says, start with the vision, understand who you are. Don't work on the outside. Understand that you are the spirit soul. Work on building the character, not the outwards. Work on inwards. एक लेडी थी, शिला प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज में, so he was talking about this concept of Bhagavad Gita कि कैसे हम ये शरीर नहीं है, we are the spirit soul. So this lady was really fat, and she came after the seminar and she thanked him a lot, and he said, so much of burden has gone out of my head because now I have understood that I'm not this body. All these years I was having this problem identifying with the body. I have understood who I am. जब हम ये जान जाते हैं तो हमें लाइफ की प्रॉब्लम्स होते हुए भी परेशान नहीं करती हैं। जब भी हमारे मन में ये आता है कि अरे ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कांट डू दिस और आई कांट डू दिस, आई फील शॉर्ट इन एनी वे, वी शुड इमीडिएटली रिमेंबर हम भगवान का अंश हैं, और क्योंकि हम भगवान का अंश हैं जो परम शक्तिशाली हैं, सो जस्ट इमेजिन how much capability each and every one of us has. There is no reason whatsoever to feel low or to feel short in any ways. So, life lesson number 2, don't feel short in any way. You are full of all capabilities because you are a fragmental part of the Supreme. That's what Krishna wants to tell us. It is so empowering when we understand this, कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। भगवान ने मुझे एक परफेक्शन के साथ बनाया। As he is perfect,
So am I, because I am a fragmental part of him. Life lesson number 3 पे चलते हैं. Because we have short time, so we will quickly go through the life lessons. There is ample of opportunity to discuss in details each and every life lesson in our forthcoming sessions. Let's see life lesson number 3. Pains and pleasures are not permanent. Another very liberating life lessons from Bhagavad Gita. कुछ भी चीज भगवान कहते हैं यहाँ इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमानेंट हो. जैसे एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि शीत आती है, सर्दी आती है और फिर गर्मी आती है. गर्मी चली जाती है, हम चाहते नहीं है कि ठंड आ जाए मगर फिर भी आ जाती है. ऐसे ही सुख आते हैं, हम चाहते नहीं है कि वो जाए मगर वो चले जाते हैं और दुख भी आ जाते हैं. और जब दुख आ जाते हैं तो हमें लगता है कि तो कभी खत्म ही नहीं होने वाले, मगर उसकी भी एक टाइमलाइन होती है. तो दिस श्लोका ऑफ भगवद गीता 2:14, वेरी ब्यूटीफुल श्लोका. इट सेज मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामी अपायनो अनित्यस्य तांतितिक्षस्व भारत. सो कृष्ण कह रहे हैं कि ये सुख और दुख और ये कैसे हैं जैसे सर्दी और गर्मी, ये आएंगे अपने समय से, निरंतर चेंज होता रहेगा. Constant change is going to happen in this life. So don't think when you are in a distressed situation, don't think that this is going to last forever. Especially because हम ladies काफी emotional होती हैं, तो हमें लगता है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके अंदर घुसती जाती हैं और हमें लगता है इसका तो कोई अंत ही नहीं है. It is never going to happen. It is never going to end. And we have this tendency to just get into depression. If you see the world statistics among people who are prone to depression, ladies, women have they constitute the larger chunk of it. भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है. सुख और दुख दोनों ही परमानेंट नहीं है. सुख आए तो अपने आप को ये मत समझ लो कि ओह now everything is fantastic, my life is just so great, I am so great. And this kind of thinking, why Krishna doesn't want you to relish so much in sukh? क्योंकि जब सुख आते हैं और हम उसमें बहुत ओवर इंडल्ज हो जाते हैं तो हम अपना आपा खो देते हैं. हम भूल जाते हैं कि दुनिया में बाकी लोग भी जो हैं वो दुखी हैं. हमारा एक एम्पैथेटिक नेचर खत्म हो जाता है दूसरों के लिए. तो जब सुख आए तो भी समझना चाहिए ये भी कुछ समय के लिए है. दिस शैल ऑल्सो पास. और जब दुख आए तो डिप्रेशन में मत चले जाओ, एंजाइटी में मत चले जाओ, वहीं खड़े रहो. See it from a distance. Understand that just like सर्दी गर्मी, this shall also pass. जैसे सुख आके पास हो गया ऐसे दुख आके भी पास हो जाएगा. ये भी परमानेंट नहीं है. तो तब तक क्या कहें, तब तक क्या करें? भगवान कहते हैं कि तान तितिक्षस्व भारतम. तब तक learn to tolerate. Learn to tolerate just like we tolerate summer and winter. Similarly, we should learn to tolerate sukh and dukh. All right. Let's move on to life lesson number 4. And that is to meditate daily. Oh, every religion in the world is talking about it. And forget people who are religious. Everyone in this world who is in any ways in a situation of being an influencer, or in the situation of motivating others, or in any situation where he has to uplift others, or even forget that, even the doctors in the medical stream are saying, do deep breathing, do some kind of meditation, it will help you. So meditate daily. भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में? कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्तस्यैष माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते.
always chanting my glories, enduring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है? कुछ फायदे देखते हैं मेडिटेशन के। सबसे पहली बात, मेडिटेशन करते ही हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस। मेडिटेशन किस फॉर्म में हो? क्या मेडिटेशन सिर्फ एक डीप ब्रीदिंग है? भगवद गीता ये बताती है कि मेडिटेशन मीन्स टू मेडिटेट ऑन द फॉर्म ऑफ कृष्णा एंड ऑन द नेम ऑफ कृष्णा। भगवान के नाम और भगवान के रूप, इन दोनों के ऊपर ध्यान करना, दिस इज मेडिटेशन। इसीलिए इस्कॉन के अंदर हम लोग बताते हैं, और आप लोगों ने भी सुना होगा, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो ये जप करने की विधि बहुत ही सिंपल है। वी सिंपली हैव टू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम जप करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हमें अपने आप वी फील हैप्पीनेस, वी फील अ सेंस ऑफ कनेक्शन विद द सुप्रीम। और जब हमारी ऐसी स्पिरिचुअल कनेक्शन हमें फील होता है, तो अपने आप जो दुनिया की एंजाइटी है उससे कम होने लग जाती है, हमारा ध्यान गलत चीजों की तरफ कम जाता है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है हमारी लाइफ में वो खत्म होने लग जाते हैं। और साथ ही साथ हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, तो हमें ये नहीं लगता कि अरे अब मैं क्या करूंगी, अब तो मैं अकेली हो गई हूँ, व्हाट विल आई डू नाउ, कोई भी नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए। बिकॉज वी नो दैट इवन इफ देयर इज नो वन, even if there is no one, there is one biggest support that I have, which others may not have, and that is God. So presence of God हमें जब हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती है, तो सारे डर निकल जाते हैं लाइफ से। What to speak of the other benefits, like we feel enlightened, we feel light, we feel calm and cool and composed. All these are just byproducts of meditation. So this life lesson is something which we all have to actually do and experience. Without doing, we will not be able to experience. In fact, that's applicable to all of them, but specifically to this one. Let's move on to life lesson number 5. And what is that? Master the art of doing work. हम सब काम करते हैं और हम सब गोल ओरिएंटेड बनना चाहते हैं। हमने बहुत किताबें पढ़ी हैं कि कैसे गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए हमें लाइफ में। इनफैक्ट आजकल मैनेजमेंट की जो बुक्स हैं, पहले तो हम लोग ये बातें समझते थे जब हम कॉलेज वगैरह में चले जाते थे, आजकल हमें स्कूल्स में ही ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स करके बता दिया जाता है कि किस तरीके से हमें गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। वी हैव टू बिकम एन अचीवर। लेट्स से भगवद गीता में क्या मास्टरी का ये आर्ट दिया गया है। ये एक ऐसा श्लोक है जिसको अगर हम समझ जाएंगे अच्छे से, तब तो हम हर चीज में चैंपियन बन जाएंगे। और अगर हम नहीं समझेंगे तो हम बोलेंगे अरे भगवद गीता में तो भगवान जो हर किसी को कॉम्प्लिसेंट बना रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तुम ड्यूटी तो करो मगर रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। अरे रिजल्ट मेरे हाथ में ही नहीं है तो फिर मुझे ड्यूटी क्यों करनी है, मैं काम ही क्यों करूं जब रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा इस श्लोक पर बनी रहती है। ये श्लोक सबने सुना हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगु अस्ति कर्मणि। तो ये श्लोक क्या कहना चाहता है, श्लोक के एनालिसिस करते हैं। एक पोर्शन है राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी। भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा ड्यूटी करने पर तो बिल्कुल अधिकार है, बट डोंट बी अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। वो ये नहीं कह रहे हैं कि फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल तो तुम्हें ही मिलेगा मगर तुम फल निर्धारित नहीं कर सकते हो। डोंट बी अटैच्ड टू द फल, जो फल आने वाला है उससे अटैचमेंट मत रखो, सिर्फ अपना काम ध्यान से करो। तो आज दुनिया वाले भी यही कह रहे हैं, जो सक्सेसफुल हैं वो क्या कह रहे हैं, भाई सक्सेस के पीछे मत भागो,
अपना काम बढ़िया से करो, अपना काम बढ़िया से करोगे, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। Aren't they saying the same thing? So Krishna is saying you have a right to perform your duty. आपका काम क्या है? अपना काम अच्छे से करना। रिजल्ट ओरिएंटेड क्या फिर हम नहीं रहे? नो नो, यू शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। भगवत गीता में भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा का पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड काम चल रहा है वहां पे, वॉर जीतनी है। तो ये मैसेज तो हो नहीं सकता कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए, मगर भगवान ये मैसेज देने जा रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखता है रिजल्ट से, वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर रिजल्ट उसकी फेवर में नहीं आता, रिजल्ट अगर उसकी फेवर में नहीं आता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, और रिजल्ट उसकी फेवर में आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए किसी की रिजल्ट, उसने बहुत काम किया, मैंने बहुत मेहनत की, आईआईटी मैंने क्रैक कर लिया, मुझे रिजल्ट मिल गया, मैं पहले से अटैच थी रिजल्ट से। अब मैं सोचूंगी यार मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तो चैंपियन हूं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, और उसके बाद आई विल बी टोटली प्राउड, आई विल फॉरगेट दैट देयर इज अ गॉड, there is somebody who is higher than me, who is also watching, and under whose direction and with whose will I have got this result. On the other hand, अगर मैं अटैच बहुत ज्यादा हूं और मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो इतने अटैच थे रिजल्ट से, ओवर अटैच टू द रिजल्ट। दे डोंट अंडरस्टैंड कि लाइफ एक बड़ी पिक्चर है, सिर्फ एक छोटी छोटी सक्सेस नहीं है। वी आर लिविंग and we are living very nicely, that itself is a success in life, but they think that my attachment to this result, that has to be performed. तो वहीं पर मिस्टेक हो जाती है। बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जो काम करते हैं, पढ़ते हैं, रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता, सुसाइड कर लेते हैं, या फिर दे स्टार्ट टू टेक, दे indulge in various vices, drugs, this, that, what not, or they'll go into depression, or they'll think कि अब तो मेरे दुनिया खत्म हो गई बस, और कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, पूरा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि डोंट बी ओवर अटैच्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस, जस्ट डू योर ड्यूटी प्रॉपर्ली, मेक सिस्टम्स, don't chase the results, make the system work hard, and then result still may or may not come in your favor. If you are detached, you will be able to tolerate whatever the result is. If it's a good result, you will remain humble, and if it's a bad result, you will not get depressed. So over attachment to results can actually be contrary to our performance. क्योंकि आपने देखा है जब हम बच्चे थे, हमें एक पोएम सिखा दी जाती थी और बोलते थे जाओ बेटा स्टेज पर, सब लोग आपकी तालियां करेंगे, आप अच्छे से परफॉर्म करें। हम जाते थे स्टेज पे, पहले से ही हमें पता होता था कि हमें तो डर लग रहा है बहुत ज्यादा, अब अगर हम वहां जाके गलती कर देंगे तो क्या होगा, और यही विचार करते 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 स्टेज फियर की वजह से हम बोल ही नहीं पाते थे। क्या मामला है? अटैचमेंट टू द रिजल्ट। सिमिलरली हम जब पढ़ाई करते हैं और एग्जाम से एक दिन पहले हम सोचते हैं कि भाई नंबर फर्स्ट आना है, इतने नंबर तो आने ही चाहिए, इतने नंबर तो आने ही चाहिए, इतने अटैच हो जाते हैं रिजल्ट से, इतनी एंजाइटी में होते हैं कि हाथ नहीं चल रहे होते। कुछ बच्चे फेंट हो जाते हैं। आई हैव सीन व्हेन आई वाज डूइंग सीए a lot of children, because there's so much of peer pressure, so much of pressure is there on their head कि मुझे इस बार तो सीए क्रैक करना ही करना है, इतना प्रेशर होता है, क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ पाते। Whereas a person who is correctly motivated, who is following the shloka 2.47, he will be balanced, he will be neutral, and with this perfect equilibrium in his mind, he will be able to perform nicely. So don't be attached to the fruits of action. That's what the shloka is saying. Just do your duty and never be attached to inaction. ऐसा भी मत सोचो कि रिजल्ट तो भगवान ने डिसाइड करना है तो अरे मैं काम ही क्यों करूं। डोंट बी लेजी
and don't consider yourself as the cause of the result of action. That's the fourth leg of this shloka. ये मत सोचो कि तुम ही कारण हो, ये मत सोचो कि फर्स्ट आ गए हो तो तुम everything is because of your मेहनत. There are so many other people who are in your family who have contributed to your success. They are teachers, they are your parents who have contributed to your success. Don't enjoy the glory alone. So this is such a wonderful life lessons, which is so practical, and it basically touches every sphere of our life. All right, let's move on to life lesson number 6. छोटा सा लेसन है मगर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, स्पेशली लेडीज की लाइफ में. भगवान कह रहे हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु. He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. सारे दुखों से व्यक्ति निजात पा सकता है अगर वो बैलेंस करना सीख ले अपनी लाइफ को. और बैलेंसिंग के बारे में बहुत सारी बुक्स हैं, हम भी देखते रहते हैं कैसे वर्क लाइफ बैलेंस लेके आए, कैसे पढ़ाई स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस लेकर आए, कैसे हम अपने हॉबीज में, बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमने में और अपने पढ़ाई के अंदर कैसे सामंजस्य बिठाएं. जनरली क्या होता है, जब भी हम बैलेंसिंग की बात करते हैं तो हम ओवरडू कर रहे होते हैं अपनी ईटिंग या स्लीपिंग या रिक्रिएशन, मगर वर्क को कभी ओवरडू नहीं कर रहे होते हैं. बहुत ही कम लोग होते हैं जो वर्क की डायरेक्शन में ओवर वर्क कर रहे होते हैं, बाकी सब जगह हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है. तो हम बैलेंस किस तरीके से करें, तो भगवद गीता कहती है कि ये सभी एरियाज में बैलेंस करना चाहिए, उतना ही इन सब चीजों को करना चाहिए जितना कि जरूरी है. ओवर इंडल्जेंस इन एनीथिंग इज बैड एंड सो इज नॉट डूइंग दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल ईटिंग, ओवर इंडल्जेंस इन ईटिंग, अगर इस हैबिट को हमने हटा दिया ओवर इंडल्जेंस की ईटिंग के अंदर, तो क्या होगा, हेल्थ तो खराब होएगी. देन अगेन वी विल बिकम लेजी, विल नॉट बी एबल टू वर्क. Overindulgence in sleeping will become even more indolent. We will keep procrastinating. सोते रहेंगे, हाँ करूंगा, आज तो बहुत सर्दी, आज तो उठा नहीं जा रहा, 1 घंटा और, let me put the snooze on, है ना, 5 मिनट और snooze, और 5 मिनट snooze. Overindulgence in sleeping. On the other hand, अगर आप स्लीप कम कर देंगे आर्टिफिशियली, 3 घंटे सोऊंगा, सिर्फ 4 घंटे सोऊंगा, तो क्या होगा, वर्क भी ढंग से नहीं हो पाएगा. ओवर इंडल्जेंस इन ईटिंग, हेल्थ प्रॉब्लम्स. कम खाओगे, माइंड ही वर्क नहीं करेगा. ओवर इंडल्जेंस इन रिक्रिएशन, टाइम ही नहीं होगा पढ़ाई के लिए. एंड ओवर इंडल्जेंस इन वर्क, यू विल फील बोर्ड, यू विल नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, यू विल नॉट फील फुलफिल्ड. तो हर चीज का बैलेंस बनाते हुए लाइफ में चलना है. और कैसे लाइफ में बैलेंस बनाना है, for every person it is going to be different depending upon your lifestyle, what you are doing, whether you're working, whether you are a housewife, whether you are a student. You have to see in your life how it works. But एक principle जो भगवान ने बताया है भगवद गीता के अंदर हर किसी के लिए, और ये हमारी लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है, हालांकि भगवान यहाँ बता रहे हैं योगियों के लिए भी, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, some spiritualist, those who want to spiritually advance, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि they have to be regulated in whatever they are doing. They have to be regulated in their habits. So balancing out, that is the life lesson number 6. Life lesson number 7. What we are, what we eat. भगवद गीता क्या कहती है, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए. तो जैसे फ्यूल डालते हैं, जितना अच्छा फ्यूल होगा क्वालिटी का, वैसे ही मशीन अच्छी चलेगी. ये मशीन यानी कि ये जो शरीर मिला है भगवान की कृपा से हमें, ये भी एक मशीन की जैसे है. इसमें जैसा आहार डालेंगे वैसा ही मन बन जाएगा, वैसा ही माइंड काम करेगा, वैसी ही इंटेलिजेंस काम करेगी, और वैसी ही ये बॉडी काम करेगी, वैसे ही दिखने लग जाएंगे, वैसे ही सोचने लग जाएंगे. तो ये तो हम सब
जानते हैं कि जो हम खाते हैं, वी आर व्हाट वी ईट, और सारे फिटनेस जो पर्सन्स होते हैं वो सब यही बोलते हैं कि वी आर व्हाट वी ईट, है ना। हमारी लुक्स के ऊपर तो वो जरूर बोलते हैं, यही कमेंट लुक से रिलेटेड होता है, हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है। मगर साथ ही साथ भगवत गीता ये भी बताती है कि सिर्फ आपकी बॉडी ही वैसी नहीं है जो आप खा रहे हो उस पे बेस्ड नहीं है, आपका मन भी, आपकी इंटेलिजेंस भी उसी पर बेस्ड होती है। योर माइंड विल थिंक द राइट थिंग if you eat right. Your body will look right if you eat right. Your intellect will run best if you eat right. What Krishna says about being right in terms of eating, let's see that. श्लोक है 17वें अध्याय का। Foods dear to those in the mode of goodness increases the duration of life. It purifies one's existence and gives strength, health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome, and pleasing to the heart. So आजकल vegan movements, sattvic food, and there are so many, people who are coming up with the same ideas here and there, a little bit coming to the Bhagavad Gita only, touching upon Bhagavad Gita only. मगर भगवान कंप्लीट साइंस दे रहे हैं फूड की, कह रहे हैं कि जो अच्छा, जो गुडनेस में रहना चाहता है, who want to be good, in case you don't know what is mode of goodness, जो सत्व गुण में रहना चाहता है, तो जो सात्विक रहना चाहता है, जो सात्विक सोच रखना चाहता है, अच्छी सोच रखना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कैसा खाना होना चाहिए जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को बढ़ाए। तो ऐसा भी कोई खाना होता है जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को नहीं बढ़ाता? सारा खाना ही तो लाइफ के लिए ही तो होता है? नहीं, बहुत सारा खाने ऐसे होते हैं जो कि हमारी ड्यूरेशन को कम कर देते हैं। Excess sugar is the most important factor affecting the aging. That's not good for our life. But a little bit of sugar, sweet, is good. That is in goodness. So it should increase, our food should increase the duration of our life. It should not reduce us, which also means that even though you may be eating the right thing, if you increase the quantity, and there's too much pressure on the internal organs to digest, your duration of life will be less. And that is the reason why in our Vedic civilization, people used to keep fast. Of course, there were spiritual benefits of it, but the bodily benefit was that it increases the duration of life. And nowadays it is already, you see autophagy, and this person who has got Nobel Prize, when he has written about this principle called autophagy, eating less increases the duration of life. So the food should be such that it increases the duration of life. It should be pure. It should lead to purity. It should also give you strength and energy to work. And it should be very good for your health. It should increase your health, not decrease it. ऐसे भी कोई खाने होते हैं जो डिक्रीज करते हैं हेल्थ? बिल्कुल होते हैं। पैकेज फूड, वी आर गोइंग टू कम टू दैट, कि ऐसे कौन से खाने खाने हैं जो ठीक नहीं है, ऐसा कौन से खाने होते हैं जो ठीक नहीं है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं श्लोक में कि कौन से खाने ऐसे हैं जो अच्छे हैं। अच्छा खाना ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इंक्रीज करेगा, प्योरिटी इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ, हेल्थ इंक्रीज करेगा, और खाने के बाद खुश हो जाओगे कि खाकर बढ़िया लगा, हैप्पीनेस देगा और सेटिस्फैक्शन देगा। अब बहुत होते हैं खाने जिसको खा के खुश तो बहुत होते हैं हम लोग, जैसे गोलगप्पे, चाट पापड़ी, बर्गर, पिज्जा खा के हम खुश तो बहुत हो जाते हैं, मगर सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं मिलती। आकर फिर लगता है मम्मी दाल रोटी दे दो, उसी से सेटिस्फैक्शन होने वाली है। So all these criteria have to be there in the food. Then which kind of food we have to avoid? हमारा फेवरेट फूड जो स्क्रीन पर है, लड़कियों का फेवरेट फूड, foods that are too bitter, too sour, too salty, too hot, too pungent, dry and burning are dear to those in the mode of passion. Such food causes distress, misery, and disease. This is the food which should be avoided. So little bit bitter is okay,
Too much bitter, too much salty, too much pungent, too much hot. That's what is rejected. What to speak of the third grade food, जिसकी पिक्चर यहाँ है और हम लोग बहुत खाते हैं. 3 घंटे से पहले बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए. क्यों? One would definitely become lazy. Then we will start complaining कि यार मैं इतना procrastinate क्यों करता हूँ? Because खाना ही ढंग से नहीं खाते. Food prepared more than 3 hours before being eaten. Food that's tasteless, decomposed, putrid. Food consisting of remnants. Remnants मतलब किसी ने खा लिया, जूठा छोड़ दिया, वही खा लिया. अच्छा, हम कॉलेज में ऐसे बहुत करते हैं. एक फैंटा ली, इसने भी पी, उसने भी पी, अरे तू भी ले ले एक सिप, अरे तू भी ले ले एक सिप. Consisting of remnants. This should be avoided. खैर कोरोना में तो लोगों ने ऐसे करना छोड़ दिया. That's a very good blessing for everyone. But in general, this will keep us healthy. This will keep us fit, and this will keep us pure in our mind. So food, that's the life lesson number 7. What to eat and what not to eat. Not just for the physical health, but also for a good mental and intellectual health. Let's move on to life lesson number 8. And the most important sought out lesson. Control your mind, else it will control you. भगवान कह रहे हैं 6th chapter में कि for whom who has conquered the mind is the best of friend. जिसने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, उसके लिए माइंड बेस्ट फ्रेंड बन जाता है. और जो नहीं होता, जिसका ऐसा काम नहीं हो पाता, जिसमें हम सभी हैं मोस्टली, his mind will remain the greatest enemy. और फिर उसको हमेशा झगड़ा करते रहना पड़ेगा अपने मन से. अरे कब पढ़ूंगी, कब चलूंगी, कब अच्छा काम करूंगी, अरे ये अच्छी हैबिट क्यों नहीं बन रही है मेरे. Always struggling with the mind. तो अनकंट्रोल्ड माइंड से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट, डैमेज टू वन सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डेंजरस डिजीजेस. कंट्रोलिंग इज द माइंड इज डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड. अर्जुन ने भी कहा, हम सभी के लिए नहीं प्रॉब्लम है, उसके लिए भी प्रॉब्लम थी. भगवान ने कुछ कीज दी, कैसे आप माइंड कंट्रोल कर सकते हैं. भगवान ने कहा, देखो अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों को प्रैक्टिस करो, माइंड कंट्रोल हो जाएगा. ये की नंबर 1 है. अभ्यास किस चीज का करना है? पहला अभ्यास करना है कल्टीवेशन ऑफ पॉजिटिव स्पिरिचुअल हैबिट्स. पहली बात, कल्टीवेटिंग पॉजिटिव हैबिट्स विच विल अफेक्ट अवर डे टू डे लाइफ. ऑल हैबिट्स विच आर इन द मोड ऑफ गुडनेस. सारी सात्विक हैबिट्स हमें अपने अंदर लेकर आनी पड़ेंगी. और साथ ही साथ स्पिरिचुअल हैबिट्स को भी हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा. कौन कौन सी पॉजिटिव हैबिट्स जो हमें सत्वगुण में रखेंगी? सबसे पहला, सुबह जल्दी उठना. सबसे चैलेंजिंग है ना, मगर सबसे अच्छा है. Everybody knows these days that getting up early you will get 90% of your work done before everybody else gets up. So getting up early is a positive habit. Other habits have to be planned. ये सारी हैबिट्स, ये गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस या सत्वगुण की हैबिट्स हैं. और ये सारी हैबिट्स के बारे में श्लोक, बहुत सारे श्लोक हैं. 18वें अध्याय के अंदर श्लोक है भगवद गीता के अंदर, 17वें में है, 14th में है. So if you want to read detail, you should read these chapters of Bhagavad Gita, where Krishna is telling about how should you work, how should you eat. All these categories of habits he is listed there. Some of them we have listed here. Being planned, keeping good hygiene, cleanliness. These are the habits, positive habits on day-to-day life that we have to cultivate. प्रैक्टिस करना है अच्छी आदतों का. और साथ ही साथ सिर्फ डे टू डे नॉर्मल हैबिट्स का भी नहीं, साथ ही साथ हमें स्पिरिचुअल हैबिट्स को भी कल्टीवेट करना पड़ेगा, ताकि हमारी इंटेलिजेंस इतनी प्योर रहे, हमारा माइंड इतना प्योर रहे कि गंदी चीजों की तरफ, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ हमारा माइंड नहीं जाए. स्ट्रांग हो सके हम अपने माइंड में. कौन सी हैं ये स्पिरिचुअल हैबिट्स? उसमें सबसे पहला है मेडिटेशन. सेकेंड, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. जब हम स्क्रिप्चर्स को रीड करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस प्यूरिफाई हो जाती है और फिर हम बहुत अच्छे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं. मेकिंग फ्रेंड्स विद डिवोटीज. अच्छे लोगों के साथ संग करना.
जैसे हमने एसोसिएशन में भी बताया था. So all these are cultivation, all this constitutes the cultivation of spiritual habits, good spiritual habits in our life. So अभ्यास करना है, बार बार मन अलग अलग जगह पर जाएगा, बार बार हमें खींच कर लेके आना होगा पॉजिटिव चीज के ऊपर. सेकंड की टू माइंड कंट्रोल इज वैराग्य. अब वैराग्य का बात सुनते ही हमें लगता है कि वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, मगर दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैराग्य जो अर्जुन को भगवान ने दिया. भगवान भगवत गीता के अंदर अर्जुन को बताया कि वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो. अर्जुन पूछते हैं कि सन्यास क्या होता है. भगवान कहते हैं कि सन्यास का मतलब है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की इच्छा खत्म कर दो. फिर चाहे तुम घर में रहो, ऑफिस में रहो, कॉलेज में रहो या जंगल में रहो, एवरीथिंग इज सेम. सो वैराग्य का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, बल्कि ये अंडरस्टैंड करना दैट आई एम नॉट द प्रोप्राइटर ऑफ व्हाटएवर इज देयर इन दिस वर्ल्ड, रादर यूजिंग एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस. भगवान की सेवा में जो भी आपकी स्किल्स हैं, every person will have some skills, every person will have something good. Use that skill set, use your qualities and your whatever you have in the service of God, in uplifting others around you. इसे कहते हैं युक्त वैराग्य. जो भी भगवान ने आपको दिया है उसका खुद भोग ना करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित कर देना. Lose the sense of proprietorship over things. That is the art of detached work. तो दूसरी की है माइंड कंट्रोल की डिटैचमेंट, वैराग्य. और तीसरी की क्या दिया है भगवान ने कि रादर देन थिंकिंग कि ये हैबिट मुझे चेंज करनी है, माइंड उधर ही जा रहा है, सोचे जा रहा है कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना. हम सोचे जा रहे हैं इंटेलिजेंस से, अपनी पूरी विल पावर लगा रहे हैं कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना. फिर बाद में माइंड हावी हो जाता है और हम वही काम कर बैठते हैं. भगवान कहते हैं कि हैव द प्रिंसिपल, वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ हायर टेस्ट. हायर टेस्ट, एक छोटी गंदी हैबिट को जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, उसको माइंड को रिप्लेसमेंट दे दो अच्छी हैबिट से. अब प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं? माइंड कह रहा है कि अरे थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे एंटरटेनमेंट के लिए मुझे टीवी दिखाओ या मुझे यूट्यूब दिखाओ या मुझे कोई भी फ्रेंड से यूजलेस बातें करने में लगा दो या फेसबुक पे टाइम वेस्ट करने में लगा दो. माइंड कह रहा है कि मुझे ऐसा एंटरटेनमेंट चाहिए. रिप्लेस करो. रीड समथिंग पॉजिटिव, रीड गुड लिटरेचर, रीड स्पिरिचुअल बुक्स विच विल हेल्प यू, विच विल नॉट टेक यू ऑन द रॉन्ग पाथ. सो प्रिंसिपल ऑफ हायर टेस्ट, by giving a better replacement, a higher replacement to the lower nature of the mind. That is how we can win over the mind. So principle of higher taste. So this is the third key to mind control. So हमने mind control में practice of the positive habits, spiritual habits, as well as our day-to-day good habits. वैराग्य में हमने देखा losing the sense of proprietorship, using our talents in the service of God, and principle of higher taste by replacing our wrong habits with positive habits, positive replacements. Life lesson number 9. Cultivate spiritual intelligence. This is a beautiful shloka in Bhagavad Gita where Krishna says that I declare that who studies this sacred conversation of ours, यानी कि Bhagavad Gita, worships me with his intelligence. बुद्धि को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं? बाय स्टडिंग भगवद गीता. जब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो ना सिर्फ हमारा विजन लाइफ के बारे में क्लियर हो जाता है, बल्कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी प्योर हो जाती है कि जब भी हमारी लाइफ में हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो हम प्रॉब्लम में नहीं आते, हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता. हमारा विजन एकदम क्लियर होता है, हमें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है. Just like Arjun, when he has heard Bhagavad Gita, his vision has become completely clear. He knows what he has to do. And it's not that भगवान ने उसको overshadow किया.
भगवान ने सब कुछ बता दिया कि ये मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये योग है, ऐसे काम करना चाहिए, दिस इज द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क. फ्रॉम एवरी एंगल ऑफ विजन ही टच्ड अपॉन द प्रॉब्लम दैट अर्जुन वाज हैविंग. एंड एट द एंड अर्जुन सेड, मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए. All my illusion has gone away. My intelligence, I have attained my intelligence back. Same thing is going to happen to us if we take shelter of Bhagavad Gita. अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो इंटेलिजेंस से हम भगवान को वर्शिप करते हैं. तो हम तो सोचते थे कि वो भगवान की वर्शिप मतलब सिर्फ घंटी बजाना और ये पूजा अर्चना करना ही होता है. मगर भगवान कह रहे हैं वो तो शरीर से होता है, और मन से क्या कैसे पूजा होती है? भगवान के बारे में सोचने से. मगर इंटेलिजेंस से भी भगवान की पूजा हो सकती है, केवल भगवत गीता पढ़ने से. सो रीडिंग शुड लीड टू थिंकिंग, एंड थिंकिंग शुड लीड टू एप्लीकेशन. Then we will not be running behind others to have their opinion about the situation in our life. We will be able to analyze the situation in our life, and we will be able to meet the right conclusion. That is the benefit of reading Bhagavad Gita. So cultivating spiritual intelligence by reading Bhagavad Gita. And life lesson number 10, if you want a purified intelligence and if you want mind control, then you have to connect with the Supreme. It's a beautiful shloka. Krishna says that one who is not connected with the Supreme can never have transcendental intelligence nor a steady mind. He cannot have either of them. He can have neither transcendental intelligence nor he can have steady mind. Peaceful mind नहीं होगा, कंट्रोल्ड माइंड नहीं होगा, प्योरिफाइड इंटेलिजेंस नहीं होगी. और अगर यही नहीं होगा तो कह रहे हैं आपको पीस भी नहीं मिलेगा, कोई शांति नहीं होगी लाइफ में. एंड हाउ कैन देयर बी हैप्पीनेस विदाउट पीस? खुश कैसे रहोगे जब शांति ही नहीं होगी लाइफ में? और शांति कैसे आएगी? जब तक मन और बुद्धि शांत नहीं होंगे. और वो कैसे होंगे? तो भगवान कह रहे हैं ओनली इफ यू कनेक्ट विद द सुप्रीम. सो एक बहुत ब्यूटीफुल सा ये पिक्चर हमें किसी ने भेजा था कि कनेक्ट टू गॉड एंड द पासवर्ड इज हरे कृष्ण महामंत्र. कैसे कनेक्ट हों भगवान से? हम कैसे कनेक्ट हों ताकि हमारा मन बुद्धि स्थिर रहे? कैसे कनेक्ट हों कि उससे हमें पीस मिले, हम खुश हों? And we all want to be happy. There's nobody in this world who doesn't want happiness. Everybody is chasing about happiness in all our endeavors. And the way to connect with the Supreme is association of devotees. अच्छे भक्तों का संग कीजिए. और आजकल तो संग बहुत इजीली अवेलेबल है. हमारे इस्कॉन के बहुत सारे चैनल्स है, इस्कॉन पंजाबी बाग, इस्कॉन द्वारका, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश संत नगर, और भी वर्ल्ड ओवर इस्कॉन के डिवोटीज जो हैं बहुत अच्छा बताते हैं स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में. और हमारे साथ यहाँ ISS के भी रेगुलर प्रोग्राम्स में आप जुड़ सकते हैं. वी हैव प्रोग्राम्स एवरी संडे इवनिंग, एंड वी ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी. उस पर हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस डालते हैं स्पेसिफिकली टारगेटेड टू साइंस बैकग्राउंड पीपल, जिसमें there's a lot of we have workshops and we have international seminars and we have international conferences where a lot of scientists come and present their view about spirituality. So association is available and you should make use of it. B is books. By reading books, अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाइए, भगवान की पूजा करिए और भगवद गीता पढ़िए. And by chanting the names of God. And by eating the right food which is offered to God. These are the basic ABCDs of spiritual life, of connecting with the Supreme, which is our life lesson number 10. There's another opportunity to have a good association. We are starting a seminar series for all of you. 5 sessions will be there. We will be discussing who am I in the first session, the science of soul. The second session would be Vedas, the infallible source of knowledge. Third, why bad thing happened to good people. Fourth, meditation for the youths. And fifth is the personal wellness tips from Bhagavad Gita. We'll be doing that every Saturday evening, 5:30 to 7.
and all the links will be shared on this groups from which you have got the link for this group. And so we will end here our life lessons for a better 2022. And if you have any questions, then please do let me know. You can unmute yourself and you can ask. I'm also looking at the chat box. Kaina, I hope I'm right. I'm reading your name correctly. Kaina is saying, same with me. I was not able to crack IIT, now suffering with depression. So you should read shloka number 247, and you should understand that there's just not one avenue. Life is much, much bigger than IIT. Okay. You are a spirit soul and you are full of all potencies. Don't be depressed and don't think negative about yourself. Namrata is saying, same here. Every night I tell myself, you are a failure. You failed in exam. You failed in life. Oh, I don't believe you. Really? I hope our session must have touched your heart in a different way. And this is actually a problem which is youths ko bahut aisi problem ho rahi hai. They fail in something and they think that this is the end of life. But that's not the case. Life is much, much more larger. It is so beautiful. If one avenue is lost, doesn't mean that other avenues are not there. Put your energy there. Same stage fear is with me. Ma'am, are you a CA? Yes, I am a chartered accountant. और मुझे भी ऐसा होता था. तब तो मैं भक्ति में नहीं आई थी. I was not a devotee. I had not read Bhagavad Gita. और in fact, you know how I joined Krishna consciousness, how I became a devotee. Because when I was doing CA, तो मुझे बहुत एंग्जाइटी थी. मुझे था कि फर्स्ट बार में क्रैक करना है, फर्स्ट बार में क्रैक करना है. तो मेरा इंटर तो फर्स्ट बार में क्रैक हो गया था, ऑल बोथ ग्रुप्स. बट मेरा जो फाइनल था, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड आई थॉट एक एग्जाम में मेरा थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मेरा गड़बड़ हो जाएगा. एंड यू नो इन सी हाउ इट हैपेंस, एक एग्जाम में फेल तो सब में फेल. तो मैंने बोला भगवान, मैं रोज मंदिर आऊंगी 40 दिन तक, अगर मेरा सीए क्रैक हो जाएगा तो. सो एवरीबडी हैज दिस फियर. आई नो this is a fear, but eventually because of God's grace, I cleared in first attempt. So I didn't have to go through that phase where I had to be depressed. Krishna's grace on me. Anyways, so Tulsi बोल रहे हैं कि be positive at every situation, no matter what. I overcame depression with this positive attitude. You are not weak. That's our thought. We make ourselves weak. So if we remember that we are part of God, अनंत शक्ति भगवान के अंदर है और उसी अनंत शक्तिमान भगवान के हम भी अंश हैं, तो हमें अपनी कैपेबिलिटीज पे कभी डाउट नहीं होगा. अगर हम अपने आप को भगवान से हटा हुआ महसूस करेंगे तो डाउट हो सकते हैं, मगर अगर भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे तो डाउट्स नहीं रहेंगे अपने बारे में. All right. Ananya Singh is saying, ma'am, what can we students do? All right, the students should study very well. Don't be too much attached to the result, but at the same time, work in such a spirit as if everything depends on you. But be detached. That is the art of work. So do your best, but don't leave the rest on just anyone or anything. लोग बोलते हैं ना, do your best, leave the rest. तो do your best तो है, that's wonderful, but don't leave the rest on just anything, on chance. Don't leave it on chance, leave it on Krishna. So do your best and leave the rest on Krishna. Archana, Radhe Radhe, Radhe Radhe ji. Okay, Shruti, thank you, ma'am. It's a wonderful session. Thank you very much for attending. I hope all of you would be interested in our forthcoming sessions as well. Okay, thank you very much. Gauri, Hare Krishna, thank you very much. And there's somebody, Sakshi Rana, with 2 beautiful hearts coming out of her eyes. Thank you. And so many others also. Grateful to you. Hare Krishna. How to handle negative comments? Krishna Sharma पूछ रहे हैं कि how to handle negative comments. By, you should be convinced of who you are and what you are doing. If you are convinced about yourself,
you will not be bothered about what others are saying. प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने बारे में कन्विंस नहीं होते कि हम सही कर रहे हैं. Then these negative comments start to bother us. So be sure, be confident of whatever you are doing. जो stand लेते हो उस पर पक्के रहो. Okay, Kaina will give my best and will improve. Wonderful, Kaina. Sakshi, ma'am, how to keep yourself away from social pressure regarding failure aspect? Failure aspect, okay. So ये बोल रही हैं इनका शिखा का ये क्वेश्चन, नॉट साक्षी, सॉरी, शिखा कह रहे हैं कि how to keep yourself away from social pressure regarding failures. So we should know that we are living life for ourselves, not for others. And if we are clear about the direction of our life, we know that this beautiful life by God has been given to us for a special purpose. Then we will not bother कि सोशल प्रेशर हमारे को बॉदर नहीं करेगा. लोग बोलेंगे मगर उसके बाद भी हमें बॉदरेशन नहीं होगी, बिकॉज हमें अपना विजन क्लियर है लाइफ के बारे में. अपना विजन क्लियर रखो, अपने पर कॉन्फिडेंस रखो, कोई सोशल प्रेशर काम नहीं करने वाला. यू शुड रिमेंबर, जब प्रॉब्लम आएगी तो ये लोग आकर मुझे हेल्प नहीं करने वाले. Only I am going to be there, or probably my family members are going to be there. So keep your vision about your life very much clear. That is the only way. Kaina, thank you. Ananya, I am also an account student. Oh, I understood when you asked this question. Shruti Pathak, ma'am, how to stop overthinking? By thinking about God. That's the way to stop overthinking. Because when you think about something negative, if you want to stop that chatterbox, give yourself a better alternative, as we discussed. Give yourself a higher taste. नेगेटिव चीजों के बारे में ही हम ओवर थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव के बारे में जनरली नहीं करते. जनरली क्या, कोई भी नहीं करता है. जो भी ओवर थिंकिंग हो रही होती है हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होती है. अरे मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा तो ऐसे करूं ही क्यों, फिर छोड़ो मैं ये काम करता ही नहीं. ओवर थिंकिंग इतनी कर ली कि पहले ही नेगेटिविटी पे पहुंच गए और वो काम ही नहीं किया जो करना था. तो इसलिए श्रुति, अगर आपको ओवर थिंकिंग खत्म करनी है और अगर आपकी ऐसी हैबिट है तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कृष्णा. If you think about Krishna, who is the most positive, you'll stop overthinking about the negative things. Shivani, Hare Krishna. Hare Krishna. Anjali Sahu, ma'am, how to overcome depression? Oh, so many of you are talking about depression. I think we should take a session on depression. So देखिए, of course, there are many aspects. One could be physical, one could be emotional aspect. You should have proper physical exercises on the bodily platform. We can say that you should have a proper physical exercise so that your mind also remains in calm, clear mode. At the same time, depression हमें क्यों होता है? क्योंकि या तो हम अपने बारे में, जब हम हार जाते हैं, है ना, हमें लगता है हम हार गए हैं, हमसे कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें अपने बारे में क्लैरिटी नहीं है. जब हमारे को अपने बारे में क्लैरिटी होगी कि मैं भगवान का अंश हूं, मेरे अंदर भी उतनी असीम भगवान ने शक्ति दी है, भगवान के बच्चे हैं हम लोग, तो कैसे हम हार सकते हैं? कोई सिचुएशन हो सकती है कि ऐसी आ गई है हमारी लाइफ में, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है हमारी लाइफ में, बट एवरीथिंग इज गोइंग टू पास अवे. अपने हाथ में अपने माइंड और इंटेलिजेंस की भागदौड़ हमें लेनी होती है, समझ के कि मैं जीवात्मा हूं, मैं सिर्फ ये मन नहीं हूं जो कि सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहा है. मैं ये इंटेलेक्ट नहीं, मैं ये स्टूपिड इंटेलेक्ट नहीं हूं जो हमेशा कॉम्प्लेसेंट है, जो प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है. आई एम नॉट दिस इंटेलिजेंस, आई एम नॉट दिस लेजी माइंड, आई एम नॉट दिस डिप्रेस्ड माइंड, आई एम अ स्पिरिट सोल. अंडरस्टैंड योर आइडेंटिटी and take the reins of your life back in your own hand. So this is just like, I'm just giving you a very simple
plain understanding of the entire thing, we can probably, because a lot of you are talking about this, we can take a session on that. All right, Vishali, Jai Shri Krishna. Okay, Shivani Kumari, I like your session very much. Thank you very much. All right, I'm just reading, I'm skipping the comments and I'm seeing if there are questions. Ma'am, how to concentrate on our goals? This is, who is this? Let me see. Shruti. Ma'am, how to concentrate on our goals? Matlab, how to be focused on our goals. In general, be focus तभी आता है जब हम अपनी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट लेकर आ जाते हैं, जब हम डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं, गुड हैबिट्स लेकर आते हैं. नहीं तो कंसंट्रेशन क्यों नहीं बन रही? क्योंकि कंसंट्रेशन तो अभी फेसबुक में है, कंसंट्रेशन अभी फ्रेंड में है, उसको फोन करना है, इसको ये करना है, इतना स्कैटर्ड है. आप भगवद गीता में एक श्लोक पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में आता है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एका है करुनंदना. भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो बुद्धि है उसको सिंगल पॉइंटेड बनाओ, सिंगल पॉइंटेड, सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म करके सिंगल पॉइंटेड बनाओ अपनी बुद्धि को. सो कंसंट्रेशन करने के लिए जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो. जितने भी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस हैं, नेगेटिव एसोसिएशन है, उसे कट करो अपनी लाइफ से सबसे पहले. हरे कृष्णा मैम, हाउ टू फाइंड व्हाट इज बेस्ट फॉर अस इन आवर करियर? हमारे करियर में क्या बेस्ट है? That depends actually. It's a very broad thing, but आपके career, what is best for us in our career depends on which career you are, है ना? और if you are in accounts for example, finance के career में है, तो पहले आप choose करो. फाइनेंस में बहुत सारी स्ट्रीम्स है, आपको क्या अच्छा लगता है फाइनेंस की फील्ड में, what you like, that usually you would be best at. हम लोगों का जनरली होता है कि कौन सा वेल पेइंग है उसके हिसाब से चूज कर लेते हैं करियर को, मगर उसके बाद उस करियर में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं. सो चूज विद इन दैट लाइन. इफ यू आर इन द अकाउंट्स लाइन, चूज विच फील्ड इन द अकाउंटिंग, इन द फाइनेंस फील्ड यू वांट. कॉर्पोरेट बैंकिंग, you want industrial banking, you want or you don't want banking per se, you want finalization of accounts, you want to go in GST, you want to go in taxes. See which field of them is attracting you and then move ahead in that. Okay, yes ma'am, thank you. All right, Shivani, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. मैम, have you left your CA job after joining ISKCON? No, that's why we are doing it on Sunday, because it's my free day. I haven't left my jobs. I work. And I've been working since I was 18-year-old, and I am now 40. So I haven't left, and that is also, not something that we are supposed to be doing. Just because we are in spiritual life, we are not supposed to leave everything. This is not the message of Bhagavad Gita. Arjun wanted to leave everything and run away to the jungle because he didn't want his job of being a warrior. But Krishna convinced him that you have to fight. You don't have to run away. Yeah. I want to also join ISKCON. You want to join ISKCON? I want to become a devotee, ma'am. Okay, so you want to become a devotee, but you can do whatever you are doing. You don't need to join ashram. You don't. So joining ISKCON, what do you think joining ISKCON is for you? Ma'am, for knowledge and ma'am God, ma'am वैसे actually I'm always, मतलब मैं हमेशा पूजा पाठ करती हूँ, मंत्रों का जाप भी करती हूँ, और काफी मतलब जितना होता है काफी करती हूँ. फिर भी बट एज अ संस्कृत नॉलेज या जो भी है, कहें कि अपने मतलब अपने धर्म के, सनातन धर्म के बारे में और जानने के लिए जानना चाहते हो? यस. ओके, दैट्स वंडरफुल. आप शिवानी बोल रहे हैं ना? सॉरी, आई एम नॉट एबल टू सी. यस मैम. तो शिवानी, यू कैन कनेक्ट विद अस. ये जो प्रोग्राम है स्पेसिफिकली हम गर्ल्स के लिए ही
लेडीज के लिए ही हम लोग कर रहे हैं, सो दैट वी कैन हैव अ प्लेटफॉर्म, वी ऑल कैन ज्वाइन, वी कैन ज्वाइन ईच अदर, वी कैन डिस्कस द फिलोसफी। हम भगवद गीता डिस्कस करेंगे, सनातन धर्म के बारे में जानेंगे, और उसके अलावा डे टू डे लाइफ में भी कैसे हमें अपनी लाइफ को रन करना है कि लाइफ भी एकदम स्मूथ चले, दोनों चीजों को साथ में पकड़ के चलेंगे, बैलेंसिंग बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, है ना? ओके मैम, थैंक यू मैम। यू आर वेलकम है। ओके ओके, सिमरन मैम, हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडीज? टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडीज, सी टाइम मैनेजमेंट सिर्फ स्टडीज या किसी के लिए भी देखिए, टाइम मैनेजमेंट का prioritization is the most important thing. What is your priority? Do that first. There are many tricks. आप ऑनलाइन जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी ट्रिक्स हैं टाइम मैनेजमेंट की. So there is no spiritual science to time management, which we have to discuss, but prioritization is the main key. And there's so many, you can read, so many books are there. Time blocking you can do, and you can also do the trick of eating that frog. If you read that book, Eat Thy Frog by Brian Tracy, that's wonderful, which means that you should be doing the most difficult task which you absolutely don't want to do. Specifically, like if you're a finance student, then you don't want to do, let's say, economics, then you should read economics first and put the other subjects for later. Or if you are any other stream student, like you don't want maths, you don't want to do maths first, spend that time, eat that frog which you don't want to eat first, and then leave the rest of the things for later. So there are so many tricks of time management. I would recommend that you read some books on time management, but it's basically boils down, everything boils down to making a system, to making a schedule, and to prioritize. Okay. वृशाली मैम, आपने इस्कॉन कैसे ज्वाइन किया? आप अपनी जॉब लगने के बाद ज्वाइन किया या पहले किया? तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मैंने जॉब ज्वाइन की इन द ईयर 2002, आपको अभी मैंने बताया था कि मैंने भगवान को बोला कि भगवान मेरा निकाल देना, मैंने बहुत मेहनत की है और मैं 40 दिन मंदिर आऊंगी, है ना? तो वो 40 दिन में जो मंदिर गई थी, मैं इस्कॉन मंदिर ही गई थी, तो जॉब भी लगी और इस्कॉन भी ज्वाइन, दोनों साथ साथ ही हो गए, so it's like that. Okay, Anjali is asking question, ma'am, as a student, how we can join Krishna consciousness in ISKCON? So आपको ज्वाइन करने का मतलब पता है क्या होता है? ज्वाइन का मतलब ये होता है कि हम भक्तों के कनेक्शन में रहें, हम रोज अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपने घर में करें. देखिए, there is a difference. Sometimes you might be seeing, because these days everything is on social media, and a lot of girls might be listening to, and that's not wrong also, we'd be listening to a lot of preachers from ISKCON who may be boys or men who are living in ashram. तो आश्रम जो होता है या मंदिर जो होता है, उसमें ब्रह्मचारी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो रहते भी हैं, वो पूरी तरीके से अपना सब कुछ घर बार छोड़ के, अपने काम धंधा पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के भी रहते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं. और जो हम लोग बाहर रहते हैं, जैसे हम लोग वर्क करते हैं, या आप स्टूडेंट्स हैं, या और जो बॉयज होते हैं जो आपकी तरह स्टूडेंट्स होते हैं, अपने घरों में रहते हैं, उनके लिए ज्वाइन इस्कॉन का क्या मतलब होता है? ज्वाइन इस्कॉन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें आश्रम में जाना है. ज्वाइन इस्कॉन का मतलब है स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए. इसका ये मतलब है कि हम अपने घरों में रहें, अपना पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, डू योर बेस्ट स्टडीज, बाकी जो डिस्ट्रैक्शन है उनको खत्म करें, अच्छे भक्तों का संग लें, चैंटिंग करें अपने घर में बैठकर, नाम जप करिए, मेडिटेशन करिए अपने घर में बैठकर, जितने भी आप समय दे सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ भगवद गीता पढ़िए. ऑनलाइन इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ संग ले सकते हैं, और यही होता है ज्वाइनिंग ISKCON. There's nothing other than this joining ISKCON. So basically, a lot of students, I have in my other groups, there are some girls who are preparing for IITs, other ladies are girls who are preparing for IAS. So the rest of the day, they are
studying, they are preparing, they are going to their tuitions, attending their classes, online classes. And then in the morning, we have our japa session. All of us join together. In the morning, we do japa together. And in the evenings or once in a week, we have our sessions where we read Bhagavad Gita. So इस तरीके से हम लोग एक दूसरे का संग लें. This is joining ISKCON. This is how we join ISKCON. Okay. Khushi Srivastav. Hare Krishna. How to adjust in college atmosphere and people with different behavior and how to stop myself from getting influenced very easily. I am always in a fear of कहीं कभी किसी के कहने में आकर smoke ना कर लूं or drinks na kar लूं. Sometimes I suppose people will start neglecting me if I deny them about something. How to deal with it? So basically क्या है, what I am feeling is that जैसे मैं अगर ऑफिस में जाती हूँ तो मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग्स में बहुत सारे लोग, लंच होता है और लंच के बाद कई बार इवनिंग डिनर्स भी होते हैं और हम लोगों को ऐसी जगहों पे भी जाना होता है जैसे लाइक जनरली जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स होते हैं या पार्टीज होती हैं वो 5 स्टार्स में होती हैं where you know there's non-veg, there's drink and everything is going on, party spirit भी होती है. But you keep your behavior. How I do it is that I have created an image of myself. Everybody knows that Amrita will be there, but she will not be doing this. And they already know that Amrita is going to be here, so will not crack bad jokes. So you know what? You keep your character firm, and then nobody will be able to influence you. Rather, and don't think that people will start neglecting you. या आप outcast बन जाओगे, या लोग आपको shame करेंगे क्या अभी से इतनी serious हो गई है. Rather, you know, initially people may think like this or may behave like this. But I tell you with my experience and the experience of millions of devotees, that they will very soon start respecting you. When they'll see that your character is stable, you don't get into wrong things. Another advantage is going to be, हर कोई respect करेगा, चाहे वो आपसे बात कर रहा हो या नहीं कर रहा होगा, उसको अंदर खाने पता होगा कि ये लड़की सही है. And the second thing is that you will always attract right crowd towards yourself. So शनिवार को करवा रविवार को थोड़ा. Okay, somebody's mic is on. Please keep yourself on mute. So you will always attract the right crowd. वही लोग आपके पास आएंगे, वही लोग आप attract करोगे, उन्हीं लोगों को जो positive होंगे, जो अच्छे होंगे. So it's better to be in a company of a small group of good people than to be in the company of everyone just to show that you also exist. You know, don't come into that influence. Keep your character stable. Very soon, सबको ये जो आपका fear है ना कि कोई किसी के कहने में आकर मैं smoke ना शुरू कर दूं, इसलिए आप किसी सोसाइटी में नहीं जा रहे हैं. आप जाइए, कोई बोलेगा smoke करोगे, नहीं मैं नहीं करती. क्यों नहीं करते? करना, या एक सूटा लगा के देख ले, क्या जाता है? You tell them that this is my standard. I live with some values and I have these values. That's it. Keep your value system. Tell everyone that this and be proud of it. Don't संकोच करके मत बताइए. अगर आप ही संकोच करके बताएंगी कि मेरा वैल्यू सिस्टम ऐसा है, जो पता है मेरी मम्मी ऐसे बोलती है, तो दूसरे बंदे ने क्या कहना है आपको? अरे अभी तक मम्मी की बात, अरे ये तो सब चलता है, ये कॉलेज लाइफ किसके लिए होती है, और मस्ती कर, मजे कर. But if they see that you really appreciate your own values, you're confident about your values, and you tell them this upfront, then nobody will be able to, you know, pull you back. No one will be able to pull you back. So don't fear this thing. Be yourself. Be appreciative of your good values. Don't doubt them. Okay? Nikita Gupta, ma'am, where is the Institute for Science and Spirituality? So we are registered in Delhi. Our seminars are going online every week. Every quarter we have science summits. So just in case you want, if you want to know where's the building, if that is the question, then it is in, we have our office space in Delhi.
We are a registered Institute for Science and Spirituality. And you can check our website for details. All right. So, all right, all the questions are over. I think I have read all the questions and comments. So in case anything is left, please do any question is left or anybody who wants to comment or say anything, I hope you have liked the session and you will be joining us for our sessions starting from 19th February, every Saturday, 5:30 to 7. This is a platform where we all invite you, all the girls specifically, and we can discuss Bhagavad Gita and various other concepts of Bhagavad Gita. So thank you very much for having joined. I request you one more thing. Since all of you are in the group, please do send your takeaways from today's session and what you have felt, what is your experience of the session in the WhatsApp group, so that if others who have not been able to attend because of some time constraint or something, they would feel encouraged and appreciative of it, and they will be able to join in the next sessions. So thank you very much for having joined. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji.